हम यूनिट 3 की बात करते हैं। ये सारी चीजें मैं लास्ट टाइम करवा चुकी हूँ, आपको हमने कराया था, ठीक है, बट इसमें कुछ पार्ट बच गया था, वो मैं स्टार्ट करती हूँ आज, ठीक है। ये प्री रीडिंग एक्टिविटी, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, ये सब मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, सैटरडे को व्हेन वी हैड आवर लास्ट क्लास, ओके। प्रेडिक्ट, विजुअलाइज, इन्फर, ये सारी चीजें भी मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्लोज रीडिंग मैं करवा रही थी, फिगर ऑफ स्पीच, डेनोटेशन, कॉनोटेशन, ये भी, माइंड मैपिंग, ये भी मैंने करवाया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी करवाया था मैंने, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिटन पीस, हाँ ये मैं करवा रही थी आपसे, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिटन पीस, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन, जब भी आप कोई पैसेज पढ़ते हो, जब भी कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई पैसेज आता है ना, तो उसको पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन रहता है भाई? आप सबसे पहले आप उस पैसेज को आप क्या कर रहे होते हो, आप एनालाइज कर रहे होते हो, आप बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट करते हो, आप देखते हो कि भाई उस पैसेज में क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, क्या थीम है, क्या कैरेक्टर है, अगर कोई कैरेक्टर है उसने अगर कोई एक्शन लिया है तो क्यों लिया है ना, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें, ठीक है। तो अगर हम मोटे मोटे शब्दों में, अगर हम एक मोटे मोटे वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो जो एनालिसिस होता है, तो इट कवर्स ऑल द व्हाट एंड हाउ पॉइंट्स ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। इट कवर्स ऑल द व्हाट एंड हाउ पॉइंट्स ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक, क्या और कैसे, ठीक है, वो सारे पॉइंट जो है एनालिसिस जो है वो कवर करता है, ठीक है। When you read a chapter of a book of any discipline, you do close reading and go through the process of analysis, which involves comprehension, interpretation, evaluation, and even argumentation. ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो किसी बुक का या कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आप एक क्लोज रीडिंग करते हो, है ना, फिर आप एनालाइज करते हो, आप प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के थ्रू आप जाते हो, ठीक है, जिसमें आप क्या क्या चीजें एनालिसिस में कई चीजें आती हैं, आप कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपका इंटरप्रिटेशन आता है, आपका इवैल्यूएशन आता है, और इवन आर्गुमेंटेशन भी आता है, ठीक है। अब जो एनालिसिस है, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं कवर करता है कि क्या डायरेक्टली बोला गया, एनालिसिस में आपको उन चीजों को भी एनालाइज करना होता है, उन चीजों को भी कैच करना होता है जो इनडायरेक्टली जिसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। सो एनालिसिस नॉट ओनली कवर्स व्हाट हैज बीन स्टेटेड डायरेक्टली, but also what is being persuaded or being indirectly conveyed। अब जैसे कोई भी पैसेज है ना, उसमें इंफॉर्मेशन आपके पास सारी चीजों की रहेंगी, है ना, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपसे डायरेक्टली थीम के बारे में नहीं बताएंगे कि हाँ ये थीम है, ये डायरेक्टली पैसेज में नहीं मेंशन हो रहा है, ये आपको ये पढ़ के समझना होता है, एनालाइज करना होता है, ये चीजें इनडायरेक्टली कन्वे हो रही होती है, ठीक है। तो अब suppose after watching a movie you may have many comments about the characters, their dialogues, song sequences and action. Do you not think that your mind had gone through the process of movie analysis which equipped you to write its review? ठीक है, अब मूवी देखते हैं आप सपोज, ठीक है, मूवी देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स होते हैं आपके दिमाग में, कैरेक्टर को लेके, उनके डायलॉग्स को लेके, सॉन्ग सीक्वेंसेस को लेके, एक्शन के बारे में, है ना। आपने क्या किया है इसमें, आपने यहाँ पे भी, ये लिखित में नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप एनालाइज ही तो कर रहे हो, आप एनालिसिस ही तो कर रहे हो मूवी का, है ना, तभी तो आप इसका रिव्यू लिख रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि आपने मूवी का आपने रिव्यू दिया, उसी तरह कोई भी बुक पढ़ने के बाद, है ना, आप लिख सकते हो एक पेज में या 2 पेज में कि भाई रिव्यू लिख सकते हो और रिपोर्ट लिख सकते हो बुक की कि भाई बुक में क्या दिया है, बुक किस बारे में, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर रीडिंग अ बुक you can write what the book is all about in a page or so, review it or write a report on it. And this has been possible because you passed through the process of comprehension, interpretation and analysis. और ये possible क्यों हो पाया है, क्यों आप लिख पाए हो, क्योंकि पढ़ने के बाद आप comprehension, interpretation और analysis के process से आप गुजरे हो, ठीक है। And beginning from its reading to writing, its review is a part of this entire process. So analysis is mainly responding to a text, ठीक है। एनालिसिस क्या है, आपके सामने कोई रिटन पीस है, कोई टेक्स्ट है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यही तो है ना, ठीक है। सो एनालिसिस इज मेनली रिस्पॉन्डिंग टू अ टेक्स्ट
by preparing a sequential list, by comparing two ideas, by working on cause and effect, by showing the contrast, by elaborating and many more ways. ठीक है, आते हैं आपके स्टेजेस ऑफ एनालिसिस, है ना, जैसे हर चीज की स्टेज होती है, उसी तरह एनालिसिस की भी स्टेज होती है. ठीक है, so analysis of any written piece after reading it minutely is to acquire the entire information stated and implied and then reach at a conclusion. तो एनालिसिस में आप क्या करते हो भाई, आप वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हो जो बताई गई है सही सही शब्दों में और जो नहीं भी बताई गई, मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों तरह की इंफॉर्मेशन पे आप समझने की कोशिश करते हो और फिर आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हो, फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन स्टेटेड है, जो इम्प्लॉयड है, वो सब अक्वायर करते हो, उसके बाद यू रीच एट अ कंक्लूजन. अब सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू विश टू कुक समथिंग विच यू हैव नॉट ट्राइड बिफोर. अब आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया. ठीक है, तो आप क्या करते हो इस केस में, आप भाई यू डाउनलोड द रेसिपी एंड गो थ्रू द डिटेल वंस. ठीक, अब आप एक बार क्या करते हो कि रेसिपी डाउनलोड करते हो और फिर आप एक बार डिटेल में जाते हो ताकि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिल सके. फिर आप फिर से पढ़ते हो, देन यू रीड द रेसिपी टू नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, एंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. मल्टीपल रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर से पढ़ते हो और आप देखते हो कि भाई क्या क्या सामग्री, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है. फिर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हो, फिर इसी तरह आप फॉलो करते हो आगे. ठीक है, सो जब आप फाइनली समझ गए हो, व्हेन यू हैव फाइनली कॉम्प्रिहेंडेड इट, अंडरस्टूड इट थॉरली, तभी आप कुकिंग करते हो फाइनली. ठीक है, सो अब जैसे कि while you are reading and rereading and taking some pauses simultaneously, some critical thinking was going on in your mind. तो जैसे इसी तरह जब आप कुछ पढ़ रहे हो, है ना, आप पढ़ते हो, आप फिर से पढ़ते हो, रीरीड करते हो, कभी पॉज लेते हो, रुकते हो, समझते हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो. तो जब आप पढ़ रहे होते हो ना, उस टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपके माइंड में होती रहती है. So this critical thinking is very crucial for comprehension and interpretation. This critical thinking is very crucial for comprehension and interpretation. Analysis of any written piece. Analysis of any written piece is similar to the recipe process. तो किसी भी written piece का analysis जो है वो बिल्कुल similar है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि रेसिपी प्रोसेस है. कॉम्प्रिहेंशन थ्रू क्लोज रीडिंग, कनेक्टिंग आइडियाज, इंटरप्रिटेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एक्सेट्रा. ठीक है, सो वंस कॉम्प्रिहेंडेड एंड प्रिपेयर्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ द एंटायर पीस, द रीडर बिकम्स रेडी टू राइट इट डाउन. अब एक बार अगर आप समझ गए हैं और आपके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी है पूरी चीज की जो आपने पढ़ी है, तो फिर आप फाइनली इसके बारे में लिख सकते हैं शॉर्ट में. ठीक है, अब सपोज कि एग्जाम्पल आपके सामने एक, ठीक है, हम सब ने एक फेबल पढ़ा था जब छोटे थे हम लोग, चाइल्डहुड में, हेयर एंड टॉर्टॉइस. ठीक है, सो ये है, वंस लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइस इन अ जंगल. दे हैड सीन ईच अदर क्वाइट ऑफन गोइंग हेयर एंड देयर. One day, as Tortoise was slowly crawling with a heavy shell on its back, the hare saw him and made fun of its walking. The hare himself was very proud of his speed and quickness. Therefore, he bragged before the tortoise and challenged him for a race. A date and route were finalized for the race, which decide the supremacy of the one of the two. So the proud hare and the tortoise reached the venue on the scheduled date and time. The race began, and both of them initiated in their fastest form. But as a tortoise's body is not made up in such a way to run like a hare, he remained much behind the hare. The hare turned behind and noticed the tortoise nowhere. Proudly, he thought of taking some rest and then finally to catch up with the slow tortoise. As he lay down under the shade to take some rest, he soon fell asleep.
And after some time, what happened is that when he woke up from his sleep, it was too late. And the tortoise had already crossed the winning line and was declared the winner. तो इसमें और कुछ नहीं, सबने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ाई है, दोनों में रेस लगी थी. हेयर बहुत ही प्राउड थे कि भाई उन्हें वही जीतेंगे, लेकिन फाइनली विनर कौन रहा? टॉर्टोइस रहा. ठीक है. अब अगर आपको एनालाइज करना होगा तो आप ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे. अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन करना है आपको कि भाई क्या मेन आइडिया है स्टोरी का, आपको इंटरप्रिटेशन करना है. तो इंटरप्रिटेशन क्या है? तो आपको इंटरप्रिटेशन में बेसिकली वो चीजें बतानी है जो क्लियरली नहीं स्टेटेड है, मतलब इम्प्लिसिट मीनिंग. ठीक है. तो क्या कोई ऐसी हिडन मीनिंग है स्टोरी की जो नहीं ओपनली दिया हुआ है टेक्स्ट में? फिर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, निष्कर्ष बताना है. ठीक है. तो आपको कैसे करना होगा कि कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रीडिंग एंड थिंकिंग. ठीक है. तो जो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है, ठीक है, वो बेसिकली आप कैसे कर सकते हो? जब आप रीडिंग और थिंकिंग की जब आप स्टेज फॉलो करोगे तब. एंड फॉर दिस पर्पस the reader of a text has to primarily get a preview of the text by using the title, context, heading and subheading, keywords, italicized and bold words. Then synthesis is done through author's tone, style, selection of words, etc., which helps in the analysis and finally of evaluation. ठीक है. अब सपोज यहाँ एक पैसेज है. ठीक है. एक पैसेज है. पैसेज क्या है? Madness is the state of being mentally ill or mind's permanent disorder. It is considered a disease that makes the sufferer to lose his or her sanity. Foolishness, sanity, lunacy, and idiocy are some of the synonyms for madness. It can contain different forms, hence cannot be defined in a particular way. A person can take the other as mad while another can take him or her as normal. So it is the reason that many people hold opposing views while defining madness, which make the definition as problematic. Madness can also be defined as acting extremely foolish or being involved in a frenzied activity. Some of the people believe that the persons who seem crazy are beyond human comprehension. Most geniuses are taken as mad during their lifetime, but they proved their wisdom through their views and inventions. So we can take the example of Socrates. So Socrates was considered a foolish, but he proved to be a great philosopher. Genius and madness are related to each other. Sometimes we find genius in ordinary lunatics who connect to the god and are related to divinity. People are deeply influenced by the happenings around them. There can be some extremely enjoyable or terribly sad events in their lives. The events can play with their emotions and affect their behavior. For instance, love is a state of temporary madness. The person gets crazy for the lover and runs after him or her. We can take the example of Mirabai. She fell in love with Lord Krishna and became crazy for him. But this love was beyond lust. She was his true devotee, but branded as mad by the people. ठीक है? So madness is the condition that is difficult to distinguish between the real madness and the feigned one. Feigned मतलब जो pretend करते हैं madness. ठीक है? Sometimes a person feigns madness to accomplish some task. It becomes difficult to identify the form of madness
from his or her behavior. We find the example of feigned madness from Shakespeare's play Hamlet. Hamlet feigns madness to avenge his father's death. His madness is often disputed for good reason because his behavior frequently keeps on baffling throughout the play. Later, he enters a sorrowful state of mind and does go really insane. To conclude, madness and sanity are related to each other. Sometimes a sane person is taken as mad, while a so-called mad person is taken as wise. The state is not a permanent one. It can change with passing time. It also depends on the perception of people, how they think and behave. तो ये था आपका पैसेज, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, ये करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। What is madness? What are the other terms that replace the word madness? How a genius is branded as mad? How do daily events impact human behavior? Explain with example from the text, ठीक है। फिर इसी में आपको पैराग्राफ भी लिखना पड़ जाता है, ठीक है। Write a paragraph of connected sentences in 50 to 80 words using at least 5 of the given words. तो आपको पैराग्राफ लिखना होगा 50 से 80 वर्ड का, और जो वर्ड्स दिए उनमें से कम 5 वर्ड का यूज जरूर होना चाहिए। 5 वर्ड जरूर होने चाहिए, कम से कम। 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। डिसीज है, डिसऑर्डर है, सफरर है, नॉर्मल है, विजडम है, सैड है, बिहेवियर है और परमानेंट है। अगला है आपका टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और ये एग्जाम में आता भी है, आपको पैराफ्रेज करने के लिए और समराइज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो समझते हैं क्या है ना, पैराफ्रेजिंग समराइजिंग क्या है। तो पैराफ्रेजिंग बेसिकली क्या होता है ना बेटा, कि जब आप कोई पैसेज पढ़ते हो, है ना, तो आप उसे अपने वर्ड्स में कैसे इंटरप्रेट करते हो, आप उसे अपने वर्ड्स में कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हो, है ना, क्योंकि जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हो उस चीज को, बिकॉज भाई अगर आपसे कोई बोलेगा आप पैराफ्रेजिंग करो, तो जाहिर सी बात है आप कॉपी नहीं करोगे। ये तो मैंने आपको रूल बताया ही था कि कोई भी क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, समराइज करना है, पैराफ्रेज करना है, तो आप डायरेक्टली कोई भी सेंटेंस लिफ्ट नहीं करेंगे मेन पैसेज से, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग में भी ये है कि जो भी आपके सामने पैसेज है, आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखते हो उन आइडियाज को, वो है, ठीक है। तो जो पैराफ्रेज करते हैं, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कोई भी सेंटेंस पैराफ्रेजिंग में नहीं लगाएंगे पैसेज से, ठीक है। दूसरी बात, ये जब आप पैराफ्रेज करते हो तो वो पैराफ्रेजिंग आपके ओरिजिनल पैसेज के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन जब हम समराइजिंग की बात करते हैं, जब हम समरी की बात कर रहे होते हैं, प्रेसी राइटिंग सबने किया होगा 12th में, ठीक है। तो समरी बेसिकली वही है, प्रेसी राइटिंग है, जहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना होता है। जो आपने पढ़ा है पैसेज में, वही आइडियाज को आपको शॉर्ट में प्रेजेंट करना होता है। तो याद रखिएगा ये चीज कि जो समरी होती है वो ओरिजिनल पैसेज से हमेशा छोटी होती है, लेकिन जो पैराफ्रेजिंग जब करते हैं वो ओरिजिनल पैसेज से छोटा भी, बड़ा भी और उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग की बात करते हैं हम, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग बेसिकली क्या है, पैराफ्रेजिंग है, it is rephrasing of another writer's ideas and thoughts into one's own words, and it is more detailed than a summary, ठीक है। तो समरी जहाँ पे शॉर्ट होती है, पैराफ्रेजिंग जो है वहीं पे लॉन्ग होती है, बहुत डिटेल फॉर्म में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। समरी में बेसिकली क्या है कि आप शॉर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो जो मेन आइडियाज है ना। लेकिन सो पैराफ्रेजिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग इज बेसिकली रीफ्रेजिंग ऑफ अनदर राइटर्स आइडियाज एंड थॉट्स into one's own words and it is more detailed than a summary। तो इसमें बेसिकली आप राइटर का जो भी आइडिया है, थॉट है, आप रिफ्रेज करते हो अपने वर्ड में, और ये समरी से ज्यादा डिटेल फॉर्म में होता है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पैराफ्रेजिंग के लिए, इवन समराइजिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द ओरिजिनल टेक्स्ट बाय रीडिंग एंड रीडिंग। तो आपको सबसे पहले तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसको आपको समझना होगा, ठीक है, बाय रीडिंग एंड रीडिंग, बार बार पढ़ने से ही आपको समझ में, ठीक है। Both are similar in the sense that in both, after reading the original text, the reader writes on the ideas given in it in her or her words and phrase structure, that is rephrase. And both are crucial skills which focus on retaining the information of the original but changing its form. तो और ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि इंफॉर्मेशन जो भी दी हुई है पैसेज में, ओरिजिनल पैसेज में, वो रिटेन रहेगी, वो हमेशा रहेगी, ठीक है, उसके साथ कोई वो नहीं करना है, ठीक। और अपने साइड से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती होती है, ठीक है। सपोज कोई ऐसा टॉपिक है, आया है पैसेज में, आपको करना है रिफ्रेज, आपको करना है समराइज करना है, और आपको मालूम है कि ये फैक्ट गलत दिया है, आपको पता है कि भाई इन्होंने तो आधी अधूरी बात कही है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मालूम है, लेकिन तो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे वहां, आप बेसिकली वही चीज लिखोगे जो पैसेज में दिया है। वहां पे वो आपका नॉलेज लेवल नहीं टेस्ट कर रहे होते हैं, वो क्या चेक कर रहे होते हैं, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपनी वहां पे व्यू पॉइंट नहीं लिखना है ना। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका ओपिनियन मांगा गया है, तो उस केस में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। समराइजिंग पे आते हैं, ठीक है। तो समराइजिंग बेसिकली क्या है कि इट इज अ शॉर्टर वर्जन दैन पैराफ्रेजिंग बट आइडियाज आर सिंप्लीफाइड इन बोथ। तो समरी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैराफ्रेजिंग का शॉर्टर वर्जन है, बिकॉज पैराफ्रेज जो है जब आप करते हो तो पैसेज से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो समरी है वो हमेशा शॉर्ट में रहती है, ठीक है। सो लेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आइडियाज हैपेंस इन पैराफ्रेजिंग. Focus is on a single idea while doing summarizing, but all the ideas get elaboration in paraphrasing. ठीक है, so step by step paraphrasing and summarizing. तो आपको सबसे पहले तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, कर्सरी रीडिंग के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम फटाफट पढ़ते नहीं कि हाँ क्या एग्जैक्टली है पैसेज में, क्या दिया हुआ है, कर्सरी रीडिंग हम करते हैं फटाफट, ठीक है। फिर जो सेकेंड रीडिंग होती है, फिर ये थोड़ा स्पेसिफिक हो सकती है और क्लोज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपको फिर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है। पहली रीडिंग तो आप सरसरी तौर से करते हो, है ना, कि फटाफट पढ़ लें, देखिए जरा क्या दिया हुआ। फिर दूसरे में आप थोड़े और अलर्ट मोड पे आते हो, आप थोड़े और अटेंटिव होते हो, और आप ध्यान से पढ़ते हो, आप स्पेसिफिकली पढ़ते हो कि हाँ एग्जैक्टली चलो क्या दिया है पैसेज में, ठीक है। तो द सेकेंड रीडिंग कैन बी स्पेसिफिक एंड क्लोज, लुकिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। फिर आगे आप क्या कर सकते हो, यू कैन अंडरलाइन द मेन थॉट्स, ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो मार्क द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट बना सकते हो। एंड जब आप नोट्स बना रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको एग्जैक्टली ओरिजिनल वर्ड नहीं कॉपी करना है पैसेज का, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस वर्ड का तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, आप कर लो, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। इस केस में आप सिनोनिम वगैरह यूज कर सकते हो, पर्यायवाची वगैरह, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इतना आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ओरिजिनल मैटर जो है यू हैव टू कीप असाइड, आपको अलग रख देना है। देन you need to write on all the important points of the original in your own language. फिर आपने जो भी important points लिखे हैं ओरिजिनल से, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में रिफ्रेश करना, ठीक है। नाउ इतना कर लिया है, देन यू नीड टू कंपेयर योर वर्जन विद द ओरिजिनल टू सी वेदर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड। फिर आपको इतना जब आपने कर लिया तो आपको अपना वर्जन देखना, ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना और देखना है कि सारे पॉइंट्स इंक्लूड हुए हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, यू हैव टू लीव ऑल द इररिलेवेंट डिटेल्स, ऑलराइट। And suppose if you find any unique word in the original which you wish to retain, then you can also use it in quotes to show the borrowing from the original. अब suppose कोई ऐसा word है जो original में दिया हुआ है और आपको लगता है कि बहुत ही unique word है और आप अपने भी rephrasing और paraphrasing और summary में आप लिखना चाहते हो, तो उस केस में आप quotes में लिख सकते हो, ताकि
जब आप कोट्स में कोई चीज लिखते हो तो उससे सामने वाले को ये पता लग जाता है कि आपने कहीं से ये बोरो किया, कहीं से कॉपी किया है, ठीक है। तो इस केस में ये परमिशिबल है जब आप कोट्स में लिखते हो तो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस है कुछ पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग का रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब सपोज कुछ सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में, सोसाइटी में या प्रोफेशनल उसमें हो रही हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपको कोई असाइनमेंट दी गई है, यू हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट, ठीक है। आपको कोई असाइनमेंट दी गई है और आपको प्रेजेंट करना है अपने सीनियर के सामने, ठीक। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगोगे तो भाई आपका बॉस इरिटेट हो जाएगा, फिर आपको बोलेगा कि भाई टू द पॉइंट बात करो और निकलिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बेसिकली अगर आप समराइज फॉर्म में पहले ही बोलोगे, बस जिस्ट दोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन करोगे, तो फिर इस तरह से आपको बेइज्जती और एम्बैरेसमेंट झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो यू हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट एंड यू आर प्रेजेंटिंग इट बिफोर योर सीनियर्स. After a few minutes, your boss gets irritated and tells you to come to the point and explain the main points briefly, as they all are short of time. So, और कभी कभी हम कोई मूवी देख के आते हैं ना, कोई पूछता है कि क्या था मूवी में, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, हम समराइज ही तो कर रहे होते हैं, हम जस्ट बताते हैं मूवी का, ठीक है। अब सपोज आपने कोई नॉवेल पढ़ी और आपको उसकी स्टोरी 2 पेज में लिखना है ताकि जो बच्चे उन्हें भी समझ में आए, तो उसके लिए भी आप समरी लिखोगे ना, you'll use summarizing. So you have read a novel and you wish to write its story in 2 pages for children to read. फिर है, you met a prospective business client and had a long dialogue with him or her. Now you have to write about the major outcomes of the meeting. अब आप एक prospective business client से मिले हो और आपकी उसकी साथ बातचीत हुई, अब आपको मेजर आउटकम के बारे में लिखना है, तो उसमें आप डिटेल में नहीं लिख सकते हो, बिकॉज अदरवाइज नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग, ओके। फिर वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, नोबडी हैज दैट मच टाइम टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। When we reach on a particular decision after going through a series of events. Now you have to write an answer to a question in examination, but only 5 minutes are left. So you cut short the writing by including only the important points of the topic which you have studied thoroughly. अब सपोज एग्जाम में ही सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको, 5 मिनट रह गए आंसर, तो जाहिर सी बात है जब आपने पढ़ाई करी होगी, जब आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी, तो वहां पे तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, राइट। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे 5 मिनट का टाइम है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे तो जाहिर सी बात है आप भाई कट शॉर्ट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वही इंक्लूड करोगे। तो भाई समरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर जगह, पैराफ्रेजिंग और समरी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके सामने, यू नीड टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ अ स्टाफ मीटिंग। आपको स्टाफ मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। अब यू मेड अ नोट ऑफ ऑल द मेन प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एंड देन प्रिपेयर द मिनट्स, a written record of what all happened in the meeting. Now you have to write a tweet to market your company and its brand. तो उसमें भी you have to cut short, है ना। Now you have to prepare an email message to reach to your existing customers, emphasizing the role of your company in customer satisfaction, ठीक है। तो उसमें भी आप short में बात करो, ठीक है। Now suppose you have done some laborious research, but not many people will read it unless written in brief. आपने कोई बहुत बड़ी laborious research करी है, but बहुत से लोग इसलिए बस नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, और जब छोटा लिखा होगा, ब्रीफ में लिखा होगा, शॉर्ट में तभी कोई पढ़ पाएगा, ठीक है। तो big lengthy research may dissuade people from reading it. Therefore, its simplified condensed version may fetch many readers. So in all the above life or business situations, the skills of summarizing are required. तो जितने भी अभी आपने लाइफ या बिजनेस सिचुएशंस अभी मैंने डिस्कस करी, तो उन सब में जो समराइजिंग का स्किल है वो रिक्वायर्ड है, वो आपका जानना जरूरी है। The CEOs, directors, executives are always pressed up for time because they are busy people. भाई उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास इतना नहीं टाइम है कि वो आपकी एक एक डिटेल के बारे में सुनेंगे। So for them, summary is the best tool, okay? So, and even otherwise people are busy in so many other things, and there is a competition for people's limited time and attention. Even if
One writes a well-researched report, and if one's superiors do not read it, then what is the utility of the report? अगर आप बहुत ही एक well-researched report लिख रहे हैं, बड़ी लंबी सी है ना, और आपके जो सीनियर है, आपके सुपीरियर, अगर वो पढ़ाई उन्होंने नहीं, तो फिर उस रिपोर्ट का कोई यूज थोड़ी ना। अगर आपने शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए होते कि हाँ ये आउटकम है मेरी रिपोर्ट का, ये आउटलाइन है ना, तो उस केस में दे विल बी इंटरेस्टेड. So moreover, think in terms of its utility when the decisions of reports are mainly taken by seniors. Now, on the basis of all the decision, we can infer. अभी तक जितनी बातें हुई उसकी बेसिस पे we can infer. A summary helps in understanding the main argument of a longer version. ठीक है? Then it prevents an overview of the entire document without going into the details of it. It helps in understanding the major content, direction, and overall idea of the original work. It helps in presenting information quickly. It helps in policy making, network marketing, advertising, and negotiating as a first step towards main proposals and reports. फिर है skill of summarizing. What is the skill required for summarizing and how you basically summarize? ठीक है, so selection and deletion, note making, miniaturizing are some of the techniques of summarizing. select करते हैं आप, delete करते हैं, note making करते हैं. ठीक है, note making मैंने डिटेल में बताया ही था, नहीं सॉरी यूनिट 5 में note making. ठीक है, I'll do it. and miniaturizing, आपको short version present करना होता है. तो बेसिकली ये सारी टेक्निक्स हैं जो समराइजिंग में हेल्प करती हैं. एंड इन फैक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ समरी वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. ठीक है, ऑफ ऑल ऑफ देम. और समरी प्रिपेयर करने के लिए वी रिक्वायर्ड all these skills. That is, we need selection, we need deletion, we need note making, and we need miniaturizing. Then when we make notes, we select more important expressions and leave or delete less important ones. ठीक है? When we write our notes into a new format in length, in a way, we present a miniature of the original by scaling down its length. F.P. Robinson developed a term SQ3R. There was a person named F.P. Robinson. ठीक है? So उन्होंने एक टर्म डेवलप किया था SQ3R. तो इस टर्म का बेसिकली मतलब है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू. SQ3R. ठीक है, तो सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू. तो इट इज बेसिकली अ टेक्निक which he developed and discussed in his book Effective Study in 4th edition in 1970, and it was later used by Derek Rountree for textbook reading. और ये जो acronym है SQ3R, it can be safely applied to note making also. So the technique can be used for note making in the following way, that is survey. So in survey you need to just skim through, that is you need just skim through the entire report. You need to look for the section heads and subsection, that is you need to do the cursory reading. Then question yourself what the headings convey, what are illustrations showing, what is the overall point expressed, etc. Then read from the introduction to the conclusion, marking all the keywords. Then recall what all you have read. Then review, reread to check whether what you have recalled is appropriate or not. So along with the process of SQ3R, make note of all the key expressions used in the report or text in the same systematic way as they appear in the main text. Include only the main expressions and leave the unnecessary details. तो आपको basically जो main important details हैं वो include करना होता है, जितने भी relevant trivial details होते हैं वो आपको leave कर देना होता है. So we can follow the following format for marking main points and sub points as we decided in note making part also.
सो मेन पार्ट जैसे 1 2 3 कर सकते हैं, सब पार्ट है 1 2 3, देन सब पॉइंट्स है तो ए बी सी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1A 2A इस टाइप से, ठीक है। नाउ स्किल ऑफ समराइजिंग, सो नाउ यू नीड टू रीड द एंटायर टेक्स्ट थॉरली। आपको कोई भी टेक्स्ट है, यू नीड टू रीड इट थॉरली। देन यू नीड टू अंडरलाइन की एक्सप्रेशंस व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। आपको की एक्सप्रेशंस अंडरलाइन करना होगा बिकॉज ओनली देन यू विल रिमेंबर, अदरवाइज फिर से पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। इट्स बेटर टू अंडरलाइन इट। सो यू नीड टू अंडरलाइन की एक्सप्रेशंस व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड। यू नीड टू मार्क पार्ट्स आल्सो व्हिच आर टू बी एक्सक्लूडेड। आपको वो पार्ट भी मार्क कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, एक्सक्लूड करना है, like minor details or long explanations, because you cannot simply use minor details in your answer. Then all the topic sentences, the main sentence of the paragraph which gives the central idea of the entire paragraph must be marked to include. Then again you need to go back and check whether you have marked all the main ideas which need to be written in the summary or not. Then you need to make note of the key ideas. Now you need to make a thesis statement. Thesis statement क्या होता है? It is basically the central sentence of an entire essay or article of whatever you have noted. So this statement would be the main objective of your summary. Then you need to combine all the expressions into separate points or small paragraphs in an organized way and write in your own words. What you would get will be a well-written substitute for the original report text and is called an executive summary. ठीक है? Then, while rewriting it in different words, you need to take care of the overall main idea is not lost. जब आप rewrite कर रहे हैं तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो overall main idea है वो रहे, that should not get lost. Rather, it is presented in clear and concise and easy to read terms. Now you need to prepare the first draft of your summary. Ensure that it is not a critique or a critical summary. Then you cannot add your own opinion or ideas to it. You need to recheck it that all the main ideas have been included or not. You need to see the language and expressions are easy to read or not. And you need to see that it is not unnecessarily lengthy. So अगर summary को define करें, coming to the definition of summary or the points of summary, ठीक है? तो you can say that it is a process. It is a process of making summary of a longer text. It is a process of making summary of a longer text. It is an activity that involves the shortening of lengthy messages. And it is the process of providing an abridged version of an argument, a narrative, or a concept. It involves the taking of detailed information and creating a condensed version of the text which covers main points of the original. Since summary is a shortened version of a longer text, it picks up only relevant and important details of the text and presents them in a minimum of space without doing harm to the subject matter. So you should keep in mind that the subject matter should not get lost and should not do any harm to the subject matter. It should be presented, but make sure that it is in the shorter version. It includes all essential details of the original and conveys the idea in the same way. The reader, without going through the original text, can get complete information of the text through the summary. ठीक है? तो अगर आपकी summary ऐसी होनी चाहिए कि summary की help से reader को सारी information, complete information मिल जानी चाहिए और उसके लिए उसे original text ना पढ़ना पड़ेगा. So summarizing requires intensive brain work and practice. The main aim of a summary is to present full sense of the document, full sense of the original text in a condensed form. It restates the purpose, main points, intent, and supporting details in one's own words.
It is a self-contained unit and is not dependent on the original text. Its chief practical value lies in the fact that it saves time and acts as an aid to memory. It is useful for the professionals like lawyers, businessmen, politicians, busy executives, and technocrats. And summarizing, it saves valuable time and helps in enhancing efficiency. It provides a shortened version of the longer text. It includes all the important arguments as well as supporting detail related to the argument. It conveys the idea of original text in the same way. It presents the information neutrally. And it is a self-contained piece of writing and does not depend on the original text. Length की बात करते हैं अगर तो summary is a shortened version of a longer text. It requires only essential details of the original but in a condensed form. There is no hard and fast rule about the length of a summary. The length depends on the nature of matter and style of presentation. And the length also depends on the purpose. A text flooded with important ideas may not even be reduced to half, while the other having few important details may easily be reduced to 1/6 in length. And generally, a summary is prepared in 1/3 of the original. तो general एक parameter है जो कहा जाता है तो 1/3 में prepare होता है. But most of the time, the summary writer is made aware about the length of the summary in advance. एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा तो आपको word limit पहले से बता देते हैं कितने word में ही आपको लिखना. Now the question arises how to make a summary. ठीक है, सबसे important तो यही कि कैसे summary लिखते हैं. So a summary is a synthesis of key ideas of a piece of writing, restated in one's own words. It includes all the important points of the original. Summary making is an art and requires certain steps to follow. First step से कुछ summary making के. So at first you need to read the entire text slowly and carefully. Find the main idea contained in it. Then reread the passage. Then read the passage again to find out sub-ideas that support the main idea. Mark or note down the key points appearing in the text. Then you need to make sure that all important points have been covered. Arrange the points in a logical sequence. Now, you need to find out the crucial details necessary to support the ideas. You need to identify the irrelevant and unnecessary information to omit so that you can delete that information and you can exclude those information. Now you need to prepare a draft in your own language with the help of the points. Now you need to make sure that all important points have been incorporated in the summary. Then you need to count the words to ensure that the summary is ready with the required number of words. If required, add or omit some of them, revise the draft, improve its language, write out the summary in its final revised form. Also mention the number of words at the end of the summary within brackets. ठीक है, जैसा प्रसी में भी करते थे, number of words dash इतना वो लिखना होता है. Then there are certain points to remember. So the writer should keep the following points in mind while making summary. The summary should be brief and concise. It should convey mere gist of the original. And it should be an independent piece of writing. It should be an independent piece of writing and it should not give the impression that it is dependent on the original text. The summary should convey the same meaning as intended by the author of the original text. The writer should not infuse his or her wish, opinion or comments in the summary. ये मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको अपने opinion, अपने view, अपने comment नहीं लिखना है. जो writer ने लिखा है वही आपको, जो भी लिखा है वही आपको इंटरप्रेट करना, वही आपको समराइज करना. अपने ओपिनियन नहीं लिखेंगे जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए. ठीक है.
So the summary should have a consecutive narrative. There should be a linkage among the sentences and paragraphs. The sentences should not lack flow or continuity. So since summary is the shortened version of a longer text, the superfluous and ornamental words used in the original should be avoided to include in the summary. The writer should not copy the words or phrases from the original. She or he should find the synonyms of the words and check their meaning from some good dictionary. The writer should combine two or more sentences and make a single sentence. A sentence or a clause can be replaced with a phrase and a phrase with a word. In case a text contains two equally important ideas, then either of them should not be rejected. Both should be combined and given equal importance. Examples, quotations, idioms that are used in the text should be avoided to incorporate in the summary. तो अगर कोई idiom है, कोई quotation है, कोई example है, so they should be avoided. उसे लिखने की जरूरत नहीं है. And if the text contains both the names as well as designation, it would be better to include the designation only. कभी-कभी क्या होता है कि किसी passage में किसी का नाम और designation में दिया होता है, तो उस केस में अगर आप सिर्फ designation लिखोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है? Because अगर आप नाम भी लिखोगे, designation में लिखोगे, तो उससे क्या होगा कि word limit बढ़ते जाएगी सिर्फ. The summary should be a piece of good English. The language should be simple and correct. It should be free from all kinds of spelling and grammatical mistakes. The summary should be free from slangs and self-coined abbreviations. वहाँ पे कोई slang आपको नहीं use करना है, कोई self-coined abbreviation नहीं use करना है. The writer should avoid the use of technical words and jargons. अब कुछ एक्टिविटी है जो आपको करनी होगी, मैं पढ़ दे रही हूँ, बाकी मैं ये जब अपलोड कर दूंगी, जब ये मैं पीपीटी जब मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो उस केस में जो है आप कर लेना, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, बट यस आई विल सिंपली रीड फॉर यू. सो ये एक्टिविटी 1 है. सो व्हेन वन हियर्स द टर्म रियलिटी अप्लाइड टू अ टेलीविजन शो, वन माइट एक्सपेक्ट दैट द इवेंट्स पोर्ट्रेड अकर्ड नेचुरली और at the least were not scripted, but this is not always the case. Many reality shows occur in unreal environments, like rented mansions occupied by film crews. Such living environments do not reflect what most people understand to be reality. Worse, there have been accusations that events not captured on film were later restaged by producers. Worse still, some involved in the production of reality television claim that the participants were urged to act out storylines premeditated by producers. With such accusations floating around, it's no wonder many people take reality TV to be about as real as a sitcom. So activity hai, you need to write the main idea of the following paragraph in 1-2 sentences and try writing it in 1 sentence only. दूसरी activity है, you are the student coordinator of your departmental society of the college. Your society organized 8 to 10 activities during the year. Being the coordinator, you prepared a report of around 4 to 5 pages covering all the events for the departmental newsletter. Now you have been asked to cut short the main report to half a page for the annual report of the college. So you need to write the summary so that all the major activities are covered and you present an overall performance of the society during the year. So a summary writer important है थोड़ा. So a summary writer should learn to deal with difficult words, try to find their simpler synonyms, try to make short and simple sentences so there is no ambiguity and the meaning becomes clear. अब ये पैसेज है जिसको आपको 50 वर्ड्स में समराइज करना है, ठीक है? पैसेज ये है, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है?
Pure is the water that contains all essential chemical elements and minerals at levels which do not pose risk to health. Absolutely pure water is not found in nature. In fact, distilled water is undesirable for health. If not present in excess, certain salts and gases in solution make water more palatable. Many of the chemicals and substances may be naturally occurring in water, but the concentration is the key factor in distinguishing between natural components and contaminants. Surface water and groundwater, though generally taken as separate resources, are interrelated. Surface water seeps through the soil and becomes groundwater. Conversely, groundwater can also feed the surface water sources. Surface water has the maximum potential for contamination. Contaminants can be natural or human-induced. Natural water contaminants may originate from rocks and soil. While industrial discharge, urban activities, leaking fuel tanks, and toxic chemical spills are some examples of anthropogenic contamination, like surface water, groundwater resources are vulnerable to contamination from many human activities. For example, when animal waste, fertilizers, herbicides, insecticides, and fungicides are applied to cropland, some may leach into the groundwater resources. Now, talking to paraphrasing, ये start करते हैं, बाकी complete तो मैं next class में करूँगी, that is day after tomorrow, ठीक है? बात करते हैं. तो paraphrasing is the process of making a paraphrase from some text, and it is the activity of expressing the information or idea of someone else in one's own words. It is a restatement of the meaning of a text with the different words than that of the original. And it is not simply taking of the words of the other person and changing a few of them to make one's own. Rather, it is the activity of translating the idea of another person and expressing it in one's own words. It is a restatement or rewording of a text that gives meaning in another form, but contains the sense that of the original material. Paraphrasing, it takes the idea from the source text and then you need to explain in full detail, ठीक है? And it does not care for the length. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये original passage से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है. And a paraphrase is the presentation of something whether written or spoken by using different words than that of the original. And it explains or clarifies the text that is being paraphrased. It contains the simpler and shorter version of the original. And it does not require the accompanying of a direct quotation. Rather than the writer adds the source at the end of the sentence or entire paraphrase. कुछ characteristics हैं good paraphrase के, जैसे कि it rephrases the source material or presents author's idea in writer's own words, and it avoids so many direct quotations. It rewords the source text in simple language and makes meaning clear to the reader. It is accurate and fair. It is cited properly. कुछ important से paraphrasing के ये भी देख लेंगे. While writing, one uses various sources of information to write something. And sometimes he or she incorporates the information verbatim and sometimes borrows the idea from the source text. So it is necessary to either quote the source of cited material or change in language. And paraphrasing is basically, it is the activity of rephrasing the source material or idea in one's own words. It allows the writer to examine the meaning of other writers' work, rephrase the idea or material, and craft it to suit her or his writing. And it conveys the message that the writer has understood the source material as well as enhances her or his credibility as a writer. And paraphrasing basically is an important tool for non-fiction writers, essayists, and journalists. And it allows the writer to incorporate the idea or material of other author in his or her work to improve the quality.
It helps to integrate the source material without the use of so many direct quotations. And it also helps the writer from the charge of plagiarism. Then the writer paraphrases the information in simple words which make the text easy to comprehend. Now, how to paraphrase a text? So as you know that paraphrasing is a complex process and it involves the presentation of facts or idea of someone else's in one's own words. The writer needs to follow certain steps to prepare the paraphrase. ठीक है? अब